तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दैट इज कोडिंग। कोडिंग की अगर बात करें तो कोडिंग एक ऐसा वर्ड है जो कोड से बना है। कोड की आईएनजी फॉर्म है। कोड क्या होता है? देयर आर सर्टेन कोड इन आवर लाइफ। कि फेसबुक पर एक्सेस करना है तो लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए पासवर्ड की जरूरत है, पासवर्ड भी एक तरीके का कोड है। जीमेल पे लॉगिन करना है अगर, जीमेल के लिए भी पासवर्ड। तो सर पासवर्ड क्या हो गया? एक तरीके का कोड ही तो हो गया। अब अगर आपको कोई पासवर्ड क्रिएट करना है, अपने मोबाइल के लिए करना है, जीमेल के लिए करना है, फेसबुक के लिए, तो मुझे बताओ ऐसा पासवर्ड चूज करोगे जो आपको लंबे समय तक याद रहे, या ऐसा पासवर्ड चूज करोगे जो 10 मिनट बाद आप ही भूल गए? तो आप क्या आंसर करोगे? सर ऐसा पासवर्ड चूज करेंगे जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमको याद रहेगा। अब उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए सर क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे लॉजिक। हम एक्चुअली लॉजिक लगाते हैं अपने पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। ओके सर, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो वी विल अप्लाई सम लॉजिक। वी विल अप्लाई सम लॉजिक। कोई भी पासवर्ड अगर आपको क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी पासवर्ड, यू विल अप्लाई ऑल द टाइम लॉजिक। आप अपने नाम से पासवर्ड बनाएंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से यू विल क्रिएट पासवर्ड विद योर नेम, विद योर डेट ऑफ बर्थ, विद योर मोबाइल, पड़ोसी के नाम से, कुत्ते के नाम से, सब क्या कर रहे हो आप? उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? यू आर यूजिंग लॉजिक। अब हम बात करेंगे कोड। कोड क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ वर्ड एप्पल। मेरे पास एक वर्ड था एंड आई वांट टू कीप दैट वर्ड सीक्रेट। मैं इस वर्ड को सीक्रेट रखना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का पासवर्ड था, कुछ भी, एनीथिंग इट इज। सो मैंने क्या किया, एप्पल को चेंज करके लिख दिया BQMF. And if you will check your dictionary, there is no meaning of BQMF. BQMF का कोई meaning नहीं होता। अब अगर किसी को BQMF वर्ड पता भी चल गया तो वो इसका कोई यूज नहीं कर पाएगा। So what is it? This is the code of Apple. मैंने बनाया है। Now if I ask you how I create this word BQMF, तो English alphabet A B C D till Z, आप सभी लोगों को ABCD आती है। So if I ask you which letter come after A के बाद कौन सा लेटर आता है? आप कहोगे सर B आता है। Which letter come after P? That is Q. Which letter come after P? That is Q, L, M, E. So I replaced all the letter with the upcoming next letters and make a code of that word. If I ask you, sir, in which language I am teaching Leo? Am I teaching in French? इतनी तो मैं हिंदी नहीं बोल रहा जितनी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। Guys, 150 students are live right now. If you guys want to create some disturbance, I seriously request you leave the session. Okay? It's a flow of a class. Every teacher have a flow of discussion. If you will break that flow, sir, आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा. To be very honest, no, neither you will enjoy nor I will enjoy. So I know there are more than 150 students are live, and please try to understand. Don't create disturbance. I am speaking in Hindi as well as in English. If you are feeling any kind of problem, you can leave the meeting. Or the last point, please make sessions in English. Mohammad Hussain. In which language I am talking right now, Mohammad Hussain? So if I ask you, can you guys apply the same pattern on mango and find the code for that word? Yes, we can make code for mango. How? After M, we all know
there is letter N. After A, that is B. After N, yes, that's very good, guys. After N, we have O, G to H, O to P. This is the code for mango. But now my question is, मेरा question आप लोगों से ये है, is this the only pattern, only logic in coding decoding to make codes, or we have several other pattern और logic? क्या हमारे पास सिर्फ एक यही लॉजिक है कि नेक्स्ट लेटर ले लो और उसका कोड बना दो, और हमारे पास इसके अलावा भी कुछ लॉजिक या पैटर्न है? Yes, बिल्कुल, because we have multiple uncountable logics and patterns in coding and decoding, and those patterns you cannot memorize. All these patterns you cannot memorize. सारे पैटर्न आप याद नहीं कर सकते. You have to reach till those patterns. उन patterns तक आपको पहुंचना पड़ेगा. And that is the thing we are going to learn in this topic. वही एक चीज है जो हम सीखने जा रहे हैं आज की क्लास. So how can we find all the patterns? How can we crack all the logic or code in coding and decoding with the help of ABCD? ABCD English alphabets. Why English alphabet? Sir, coding अब English में है तो English है. How many letters we have in English alphabet? 26. I know you all know very well about ABCD. आप सभी लोगों को ABCD बहुत अच्छे से आती है. So I am not going to teach you about these letters. I am going to teach you some other thing. मैं आपको कुछ और सिखाने की कोशिश करूँगा. Okay. So how many total letters कितने हमारे पास total letters हैं in English alphabet? English alphabet में 26 letters भी है. In these 26 letters, if I ask you which letter comes first, आप कहेंगे A पहले नंबर पे. A is first letter, B is second letter, C is third letter. But what if I ask you which letter is 11th letter? Now you have to count. अब आपको count करना पड़ेगा कि 11वां letter कौन सा है. Then you will understand 11th letter is K. Now if I ask you which letter is 23rd, again you will start counting. फिर से आप count करोगे और आपको पता चलेगा 23rd letter कौन सा है. So जो मैंने letters के नीचे 1, 2, 3, 11 and 23 लिखा है, this is called place value of alphabets. ये क्या कहलाती है letters की? Place value. This place value we have to learn. ये place value हमको सीखना होगी, याद करना होगी, because it is going to help us in coding decoding as well in several other topics. Analogy, classification, alphabet series, machine input output, several other. So this place value used in several other topics, दूसरे बहुत सारे topics में use होती है sir. So we have to memorize all these place values. How can we learn? How can we memorize? कैसे याद कर सकते हैं? So we will discuss about A to M first, and after that N to Z. पहले हम A से M तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद N से Z तक डिस्कस करेंगे. Clear? Okay. I will teach you how you can learn all these place values. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं आप इन सभी place values. First of all, ABCD. So we don't need to learn it. Sorry. 1, 2, 3 and 4. We already, sir, please go this, sir, speed run दो अभी शिंदे जी, है ना? Because it is very important. Give me just 5 minutes. I will teach you each and everything related to this. Okay? If it will need it, I will have some other extra sessions. अगर लगेगा कि टाइम थोड़ा सा कम है, ज्यादा रह गया सिलेबस, तो उसके लिए करेंगे, बट थोड़ा सा. So ABCD 1, 2, 3, 4 हमको याद करने की जरूरत नहीं है. We don't need to memorize it. Reason हमको पहले से याद है. Next, there is a code
there is a code. So all the place value will look like this. So there is a code to learn all the place values, some place values, that is called Exotic. So in Exotic, as you can see, there are 5 letters. The place value of these letters are 5, 10, 15, 20 and 25. If you know the table of 5, अगर आपको 5 का पहाड़ा आता है, so as you can see, all these letters have multiples of 5. So Exotic can help you out to memorize some place values. Next. So the next letter is E. So the next letter is E. And exotic E 5 ones are 4. Next letter is F. For F, you have to remember a line. आपको एक लाइन याद करनी है. Fix is 6. Fix is 6 से क्या बनेगा? Fix से बना F, 6 से बना 6. That is 56. आपको साथ साथ लिखना होगा guys. You have to write it down. Okay. I will erase all these things. So next is G. As you we all know, there are several summits happen all over the year. पूरे साल बहुत सारी summits होती है अलग अलग countries के बीच में. There are several summits like Asian Summit, NATO Summit, BRICS Summit, Shark Summit. So there is a summit called G7 Summit. G20 Summit, India hosts this year G7, G20 Summit. In the same way, G7 Summit. Next is H. How? Heavy, weight. Heavy H, weight 8. Heavy weight. और else H को बनाइए, ऊपर से बंद कर दीजिए, नीचे से बंद कर दीजिए, क्या बन गया सर? Next is I. For example, I told you something that you already know. For example, मैंने कहा 2 plus 2 is 4. What you will answer me? Yes sir, I know. Yes sir, I know. So I know. And 9 को हिंदी में कहते हैं 9. 9 is no in Hindi. So yes sir, I know. The second letter of Exotic is J. Table था 5 का. Second is J. 5 2s are 10. So the place value of J is 10. In the same way, जैसे मैंने आपको summits के बारे में बताया, G7 summit. In the same way, in India we have several cricket tournaments all over the year. पूरे साल बहुत सारे cricket tournaments चलते हैं. In which most famous is IPL. There are several teams played in IPL. IPL में बहुत सारी टीम खेलती है. पंजाब की हमारी जो टीम है उसका जो पुराना नाम था, I love that name because it was Kings 11 Punjab. So the place value of K is 11. How? Kings 11 Punjab. Next is M. First of all, we will discuss about M. Total letters are 26. 26. Half of 26 is 13. 26 का आधा 13 होता है and the half letter is M. Half letter is M. And if M is 13, then L should be 12. L should be 12. Because L, M, N, O, P ये letters हमें rhyming में याद है. So A to M. I have told you. I have told you. I have teach you. मुझे बताइए समझ में इतनी बात या नहीं है? Quickly. Okay, what you have to do? You have to read it 5 times. Read it 5 times. Then we will move to the next question. Sorry, next place values.
You guys are so impatient. You know that? Great technique, sir. It really works. Okay, Navneet? I know, sir. Videos are stuck, sir. No one is dancing in videos, sir. तो अगर मैंने स्क्रीन को वैसे ही छोड़ा है तो वो स्टक लगेगी ना आपको. नेक्स्ट, E Joti. Her letter is O. Table is of 5. 5 3 is 50. We know some letters in rhyming. L M N O P. बचपन से हमें याद है 9 से. N O. If O is 15, then O should be, N should be, and P should be. Next, Q. Most common word we know with Q is Q for queen. बचपन में याद भी किया था हमने. So there were a king, एक राजा था, who have 17 queen. Lucky, I guess. So if someone asks you the place value of Q, that is 17. How? A king have 17 queen. Next, as I told you about IPL few minutes before, IPL is a 20 over match. In IPL, we have all the matches of 20 over. That is also called T20 match. IPL में जितने भी मैच होते हैं सर वो 20 ओवर के होते हैं जिन्हें हम T20 मैच. So in a T20 match, S score 19 run and R score 18. S ने 19 रन बनाए और R ने. If you really like cricket, आप इसके नाम भी पकड़ सकते हो. Like Suresh Raina, Rohit Sharma. I don't like cricket so much because I don't have time to watch. तो मैं यहाँ पर क्रिकेटर्स का नाम नहीं लूंगा. सनराइजर्स हैदराबाद. सर इसको रहने देते हैं, ज्यादा टफ हो जाएगा. So S scored 19 run and R. Next, in the same way, as said the international matches, there are some other इंटरनेशनल टीम के अलावा जो हमारे पास अलग टीमें हैं, अदर टीमें हैं, दैट इज अंडर 19 टीम, अंडर 14 टीम, अंडर 21 टीम. व्हाट इज अंडर 21 टीम? ऑल द प्लेयर कैन हैव मैक्सिमम 21 एज. कोई भी प्लेयर 21 साल से बड़ा नहीं हो सकता. दैट इज अंडर 21 टीम. So in under 21 match, we for Virat Kohli, because Virat Kohli is damn famous. Virat Kohli scored 22 runs. Next is XYZ. Next is XYZ. In XYZ, Z is 26. Y last letter. Ejoti ka last letter Y. 5 fives are. So X should be 24 because Y 5 fives are 25. वैसे भी आसान है. 24 25 26 XYZ. And the last letter is W. W से बनने वाला सबसे कॉमन वर्ड जो आप दिन में कई बार यूज करते हो अपने बैंक में, दैट इज विड्रॉ. विड्रॉ मींस पैसे निकालना. आपने अपने नाम का और करीबी का एक लेटर आपके दो लेटर कम हो जाएंगे, समाधान कर सकते हो सर. करीबी कहाँ से पकड़ोगे? सो विड्रॉ वर्ड आप लोग यूज करते हैं और विड्रॉ मैंने किसी और वजह से भी बताया है. सो how much rupees, how much amount you withdraw from your bank account, that is 23. 23 रुपए आपने बैंक से निकाले. So you withdraw 23 rupees from your account. All the place value I have told you again 5 times. You have to read.
Question is now on your screen. Place value will look like this. So can you try to solve this question? Will you try this? That's very good, guys. So how can we approach coding decoding question? Coding decoding question कैसे approach करेंगे? Teacher is coded this. So first of all, whatever the word is, I know maximum from our class student can solve this question. मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ what is the approach to solve these questions. So what is the approach? So first of all, whatever the letters are in original word, we have to write down the place value of those letters. So T is T20, E5, A1, C3, H8, heavyweight, E5, R8. And again, the same happened with do the same task with all these letters. So the place value of V is 22. Virat Kohli made 22 runs. Okay, Shiva. G7, C3, E5, J10, G7, T20. 20 become 22. So add 2 किया है हमने. 5 becomes 7. Again add 2. 1 becomes 3. Add 2. 3 becomes 5. Add 2. We have to add or plus 2 in each and every letter to make the code word. What we have to do with cheater? Write down the place value of all the letters. सभी letters की place value लिख लेते हैं फटाफट. Add कर देंगे 2. We have to add 2 in those letters. 3 to 5, 8 to 10, 5 to 7, 1 to 3, 20, 22, 7 and 20. That's very good. Mukta 5. Mukta, that is E. 10, that is J. Mukta आपने क्या 3 क्यों जोड़ दिया? I seriously don't know. 7 is G. 3 is C. Okay, complete wrong. Mukta. मैम जो यहाँ पर हुआ है वही यहाँ पर कर. So my question is, in each and every question we have to add only 2. That's all. क्या सभी क्वेश्चन में आपको 2 जोड़ना है? सॉल्व हो जाएगा? अब बिग नो. पैटर्न कैन बी एनीथिंग. पैटर्न कुछ भी हो सकता है. वी हैव टू फाइंड. जैसे कि इसमें हमने 2 ऐड किया. फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में 4 ऐड हो रहा है एंड वहां पर वर्ड है ज़ेब्रा. The place value of Z is 26 plus 4, it would be 30. Which letter comes at 30? In the same way, if there is a pattern like -4 and there is letter A, the place value of A is 1. 1 minus 4 is -3. Which letter comes in -3 place value? Sir, please repeat. मैम इसमें क्या रिपीट करना है? आप प्लेस वैल्यू लिखो. देखिएगा मुद्दा 20 become 22. तो 20 में आप कितना ऐड करोगे कि 22 बन जाए? प्लस करोगे 2.
5 becomes 7 plus 2. 1 becomes 3 then plus 2. So when we will add plus 2 in each and every letter, we have code. Apply the same thing in question word and find out the code for that. Look up. Am I clear to you? So always remember one thing, हमेशा एक बात याद रखिए, जो हमारी ABCD इंग्लिश अल्फाबेट है फ्रॉम A to Z, ये ना तो A से स्टार्ट हुई है ना तो Z पर फिनिश हुई है. इट्स अ क्लोज साइक्लिक प्रोसेस. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. जैसे ही Z आता है फिर से शुरू हो जाता है A B C D till Z. So 26 plus 4 means 4 बार आगे जाना है. 1 2 3. 30 पर हमको क्या मिलेगा? Next, A minus 4. Minus 4 means you have to return from 4 times from A. Z, Y, X, W. So minus 4 is. Am I clear? Please pass. सुशांत, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ABCD ना तो A से शुरू होगी ना तो Z पर फिनिश होगी. अगर आपको Z से आगे जाना है, you will start it with A again. For example, in previous question, pattern was of +2. अगर +4 हो रहा होता किसी क्वेश्चन में, क्या हो रहा होता? +4 और वहां पर Z आ जाता. तो Z plus 4, 26 plus 4, that is 30. 30 पर कौन सा लेटर आता? We have only 26 letter in English alphabet. तो 30 पर क्या लोगे? 30 पर है. Okay. Okay. Try this question. Try this one. Okay. Nice. So again, the word is teacher, but this time code is different. The code is VCC AJC. Write down the place value of each and every letter. सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं भैया. Okay, 20 become 22. It is clear. Plus 2. But 5 become 3. So minus 2. 1 become 3 plus 2. 3 become 1. That is minus 2. 8 become 10 plus 2. 5 become 3 minus 2. Okay. So the pattern is plus 2 and minus 2 in this sequence. We have to solve and find out the code for student. हमको सॉल्व करना है और स्टूडेंट का कोड फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, place values of all the letters are 19, 20, 21, 4, 5,
14 and 20. Let's start. Plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 19 of 2, 21, 18, 23, 2, 7, 12. जिस पर जो प्लेस वैल्यू पर जो लेटर आता है देवकन्या 21 is U, R, 23 is W, D, G, L. Please tell me. सर सब देखना पड़ेगा ना कभी कभी यस सर सब देखना पड़ेगा फर्स्ट वाला राउंड हो गया दूसरे को नो प्रॉब्लम नो सर व्हाटएवर सेकंड सर इसमें सर रिपीट बबलू सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखिए बबलू जी एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ओके टाइम की शॉर्टेज नहीं होती मैं आपको जरूर दोबारा बताता all the question it is not necessary that every time you can solve all the question with plus minus and multiply there are some other patterns plus minus और multiply करके अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो हर बच्चा कर देता है every student will able to in plus and minus thing na so there are some other pattern too so the next question is on your screen please try teacher का कोड फिर बदल दिया उसने कीजिए that's very good guys so this time code for teacher is so mirror image no that is not called mirror image थोड़ा मुश्किल सवाल कराओ ना सर नीलेश ऐसा मत करो यार भाई देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा मत करो सो हर बार क्वेश्चन प्लस माइनस से सॉल्व हो दैट इज नॉट नेसेसरी सो इन दिस क्वेश्चन द लास्ट लेटर आर उसको उठाकर मैंने गाइस यहाँ पर रख दिया सेकंड लेटर इज ई थर्ड लेटर इज एच सी सो बेसिकली व्हाट आई डिड मैंने क्या किया मैंने पूरे टीचर वर्ड को रिवर्स करके लिख दिया दैट इज कॉल्ड जंबल कोडिंग दैट इज कॉल्ड जंबल देयर आर सेवरल अदर पैटर्न ऑफ जंबल कोडिंग हम करेंगे अभी सो व्हाट वी हैव टू डू जस्ट रिवर्स चीटर हाउ
RETAEHC। सो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। दिस इज जंबल कोडिंग, दिस वन +2 -2 एंड लास्ट +2। अगर आप देखोगे तो एवरी क्वेश्चन वाज वेरी इजी। क्वेश्चंस एकदम आसान थे। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता होती तब भी आप सॉल्व कर लेते, आराम से कर लेते। देन व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट प्लेस वैल्यू? सो कोडिंग इज ऑफ 3 टाइप। कोडिंग 3 तरीके की होती है। वन इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल कोड। एग्जाम्पल आपके सामने है। अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट में है, सॉरी। नेक्स्ट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल टू नंबर कोडिंग। अल्फाबेट का कोड काहे में होगा सर? नंबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड red is code 360, what would be the code for cat? And now this is the question you cannot solve without the help of place value। ये वो क्वेश्चन है जो आप बिना प्लेस वैल्यू की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये लिखे हुए हैं इंग्लिश और ये लिखे हुए हैं नंबर्स। बताइए क्या होगा? व्हाट वुड बी द आंसर? टेल मी। ओके, तो वेंकट रमन। सर ये क्या रेड वाला समझ नहीं आया सर। देव कन्या, द वर्ड इज रेड, द कोड इज 360, सॉरी 60 का 6 मिल गया। रेड इज 360, यू हैव टू फाइंड द कोड फॉर कैट। सो या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है या तो निलेश या तो मल्टीप्लाई। वी हैव टू फाइंड हाउ वी कैन हैव 360। If I multiply all these numbers, 18 5s are 90, 19 90 4s are। सो मल्टीप्लाई करके आया, तो यहाँ पर सेम पैटर्न यूज करके देखते हैं आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट ट्राई दिस एग्जांपल। अल्फाबेटिकल टू नंबर कोडिंग। ओम का कोड 56, नमो कोड इज 172। यहाँ पर दो वर्ड हमारी हेल्प के लिए दिए हैं। ही इज आस्किंग फॉर द कोड ऑफ शिवाय।